Good evening, everyone, and welcome to my geography class. So, today my topic is resources and development. I am Sudhanya Gupta. Let's start the topic. सो रिसोर्सेस को रिसोर्सेस के बारे में मैंने क्लास 7 या 8 में मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले चुकी हूँ. सो सॉइल ये सब जब पोल्यूशन के हिसाब से, जैसे वाटर पोल्यूशन, सॉइल, लैंड पोल्यूशन, ये सब के हिसाब से हम लोग रिसोर्स के बारे में इनडायरेक्टली बात कर चुके हैं. सो एवरीथिंग इज आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू satisfy to need our technology accessible economically and feasible and the culturally acceptable is the termed as a resource. जो चीज टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली जो एक्सेप्टेबल होता है उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं. Here you can see the classification of resource. रिसोर्स का क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में बायोटिक, एबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट इज इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल. So on the basis of the status of development, that is potential, the potential developed stock, etc. So here you can see the chart that is resources. हम लोग देख सकते हैं natural and human. Natural में renewable, non-renewable, and human में structures and institution, quantity and quality. And renewable में हम लोग दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, that is the continuous or flow, that is wind, water. एंड बायोलॉजिकल में हम लोग फिर से दो भाग कर सकते हैं, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ये वाइल्ड लाइफ क्या है ये हम जानते हैं. नॉन रिन्यूएबल, दैट इज द रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल. रिसाइकल में दैट इज द मेटल्स आते हैं, एंड नॉन रिसाइकल में फॉसिल फ्यूल. On the basis of the origin, biotic and abiotic resources are obtained from the biosphere and have life, जैसे कि human beings, flora, fauna, etc. Abiotic क्या है? Abiotic जो है, that is the composition of the non-living thing, is called abiotic, like rocks and metals. On the basis of renewable, non-renewable, renewable क्या क्या है? The resource which can be renewed मतलब फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, उसी को हम रिन्यूएबल बोल सकते हैं, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्सेट्रा. एंड नॉन रिन्यूएबल क्या है? दैट इज द ऑकर ओवर द वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ द ईयर in their formation. Some of the resources like metals are recyclable, and some like fossil fuels cannot recycle. So the example is minerals and fossil fuel. On the basis of ownership, individual, community, national and international. Individual resource के हिसाब से हम अगर बोलेंगे तो एग्जाम्पल्स है प्लांटेशन, पॉन्ड्स, वाटर इन विल्स, एक्सेट्रा. कम्युनिटी बेस के हिसाब से हम बोल सकते हैं जो बूरियल ग्राउंड, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, एक्सेट्रा. नेशनल लेवल के हिसाब से हम बोल सकते हैं रोड्स, कैनल्स, रेलवे. एंड इंटरनेशनल के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइक द oceanic resources beyond the 200, that is the nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and not individual country can utilize this without any concurrency of the international institute. On the basis of the potential development stock, like Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of the wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Developed resources which are surveyed
and their quality and quantity have been the determined for the utilization. This development of the resource depends on the technology and the level of their feasibilities. That is the material in the environment which have the potential to satisfy human needs, but the human beings do not have the appropriate technology to access this. This is called stock. That is, the hydrogen can be used as a rich resources energy, but we do not have advanced technology to use it. ये जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन जो गैस है वो बहुत सारे कामों में लग सकता है, लेकिन हम लोगों के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग हाइड्रोजन गैस को हम लोग काम में लाए. That is the reservoirs and the subset of the stock which can be the put into the help of the existing technical known how in their use has not been the started. This can be used to the meeting, that is the future requirement. That is the water in dams. Forest is the reserve which can be used in the future. Development of resources, that is a depletion of the resources for satisfying the greed for the few individuals. Accumulation resources is the few hands which turns divided to the solar into the two segments. It has led to the global ecological crisis such as the global warming, ozone layer depletion and environmental pollution. Resource planning is the essential for the sustainable existence for all forms of the life. That is, the sustainable economic development means that is the development should take place without damaging the environment, and the development in the present should not be the compromise with the need of the future generation. रिसोर्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी सोर्सेस अक्रॉस टू द रीजन्स अकॉर्डिंग टू द कंट्री. रीजन्स ऑफ कंट्री, ये जो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम रिसोर्स को, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं different technology use करके, matching the resource development plan with the overall national development plans. सो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ ये मैचिंग करके हम लोग रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, दैट इज द रिसोर्स को प्लानिंग करके यूज कर सकते हैं. एंड रिसोर्सेस कैन कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट only when they are accompanied by appropriate technology, the development and institutional changes. India has made concerted efforts towards the achieving the goals of the resources planning right from the first 5-year plan launched after इंडिपेंडेंस. जैसे कि हम लोग पंचवार्षिकी जो परिकल्पना होता है उसको हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से ही लॉन्च किया गया है. दैट इज द लैंड रिसोर्स क्या है? लैंड रिसोर्स कितने परसेंट है? दैट इज 43% है प्लेन्स, 30% है माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज है 27%. लैंड यूजेस कैसे होता है? फॉरेस्ट के हिसाब से होता है, फेलो लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, बहुत सारे लैंड एग्रीकल्चरल पर्पज से यूज होता है, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज में यूज होता है. इस तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन होता है. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साल का, दैट इज 1960 to 61 एंड 2014 एंड 15 के लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में क्या क्या है, कैसे ये दोनों का पोर्शन जो है कैसे बढ़ा है, कैसे हम लोग यूज किए हैं इसको. सो इसी के हिसाब से हम देख सकते हैं. ये पिक्चर आप कंपेयर करके देख सकते हैं. ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है. जैसे कि फॉरेस्ट के पोर्शन में 1960s में 18.11% था, अभी जो है अभी वो 23.3% हुआ है अकॉर्डिंग टू 2014 to 15 के हिसाब से. दैट इज एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस 46.26% था 1960 में, अभी 45.5% हुआ है. सो इस तरीके से आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं.
So, wasteland and the land of put the other non-agricultural uses, which include the rocky, arid, and the desert areas, roads, railway, industry, etc. So, afforestation of the proper management grazing, that is the कैसे हम लोग ये problem solve कर सकते हैं, that is the planting of the shelter belt of the plants, that is sustain, stabilization of the sand to growing the thorny bush, that is the proper management of the wasteland, control of the mining activities. सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल को हम लोग रिसोर्स के हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज द मिलियंस ऑफ एगो सॉइल up to a few semis in depth, various forces of the nature such as the changes of the temperature, action of the running water, wind and glacier activities, and the decompressors, decompressors, etc., is contributed to the formation of the soil. So the chemical and organical changes, soil में chemical organical changes होता है, so soil play an important role, and the soil is also consistent as the organic and inorganic material. And that is the classification of soil. Alluvial soil कैसे होता है, that is alluvial soil three main important Himalayan river system में देखा जाता है, that is the Indus and the Ganga and Brahmaputra. इसको हम alluvial soil बोलते हैं. It is also found in Rajasthan, Gujarat, in the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri rivers. The alluvial soil consisting that is the proportion of the sand, sleet and clay. सही सही चीज प्रोपोर्शन के हिसाब से रहता है. ये रिवर वैली में ही ये जो सॉइल है ये देखा जाता है. That is the classification. The best of the age alluvial soils can be classified old alluvial बंजर जमीन and the new alluvial खदड़ जमीन. तो ऐसे बंजर जमीन जो है, it is that is ये बहुत ही जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है, लेकिन जो फर्टाइल है, बंजर जमीन से ज्यादा फर्टाइल है, दैट इज द न्यू एलुवियल सॉइल. ब्लैक सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल जो है ये डेक्कन क्रैप में देखा जाता है. डेक्कन प्लेटू में ये सॉइल कहाँ कहाँ से कौन से स्टेट में, दैट इज द महाराष्ट्र, दैट इज द मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जगह पे ये हम देख सकते हैं. ब्लैक सॉइल में दैट इज द रिच टू द दैट इज द कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लाइम, ये सब कुछ रहता है. ये सॉइल में difficult to work unless till the immediately after the first shower or the during the pre monsoon period. ये सॉइल में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्री मानसून पीरियड में ये सॉइल में काम अच्छा होता है. ये है ब्लैक सॉइल का पिक्चर. दैट इज इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल. रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पे देखा जाता है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंजेस प्लान एंड ऑल्सो द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट. सो ये सॉइल में मेटामॉर्फिक रॉक्स ये सब रहता है. दैट इज इट्स लुक लाइक अ येलो व्हेन इट्स ऑकर टू द हाइड्रेट फॉर्म. Laterite soil क्या है, laterite soil develop under the tropical and the subtropical region. So laterite soil में pH का values जो है less than 6 होता है. It is type of the soil that is the mostly in southern states, western घाट region, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये सब जगह पे ये रहता है. ये soil supports to the evergreen forest but humus poor, इसका जो humus है वो poor है. The soil is very useful to growing tea and coffee. Yes, laterite soil, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि टी एंड कॉफी ग्रोइंग के लिए कौन सा सॉइल अच्छा है, दैट इज द laterite soil. Arid soil is the range from the red to brown color. So arid soil is lacks humus and the moisture. इसमें humus moisture ज़्यादा नहीं रहता. It is soil occupied by the conker because
it is increasing the calcium, that is the content of the downwards. That is the conquer layer is formation of the bottom horizon to restrict it, that is the infiltration of the water. That is the forest soil. Forest में भी soil का एक importance है. hilly and mountainous area में soil का importance है. दैट इज ये जो पिक्चर है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहाँ कहाँ पर है. दैट इज द एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट एंड द एरिड सॉइल. ये जो पिक्चर है मैंने नेट से डाउनलोड किया है, आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं. इससे पूरा सॉइल का जो पिक्चर है ये क्लियर हो रहा है इस पिक्चर से. तो सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? प्रोलॉन्गिंग along to the counter lines of the flow of the water down on the slope. This is called the contour prolonging. That is, इससे क्या है? Large field is divided into the strip, and the strip grass at the left grow between the crop. Then the bricks up, that is the forest wind it method to the known as the strip cropping. different हिसाब से हम लोग soil erosion and soil conservation हम लोग कर सकते हैं. That is the trees can create, that is the shelter helps to the stabilization, and the sand dunes of the stabilizing that desert in the western India. Rows of such tree is called the shelter belts. So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.